Good evening, this is Swastika Panda from Odisha TV.in bringing you today's news from Odisha. First, the headlines. Dawn to dusk Bandh disrupts normal life in Rourkela. Protesters are opposing government upgrading the steel city to corporation status. Rourkela Bandh issue rocks Odisha Assembly. Opposition alleges land belonging to tribal people included in the newly formed corporation without their consent. Vice Chairman of SIT on Black Money Justice, Arijit Pasayat, sees huge black money being generated from the education sector. Says investigation is on. Appellate Tribunal for Electricity to hear the Reliance plea on 24th of this month. OERC says it will defend revocation of the DISCOM's licenses. And OPECA to knock AICTE doors over engineering college seat hike in Odisha. Normal life was disrupted in Rourkela today on account of a dawn to dusk bandh observed by Adivasi Milita Mancha of Sundargarh district protesting assigning corporation tag to the steel city. Shops and business establishments remained closed during the period and vehicular movement was also affected as workers of the bandh staged demonstrations at different places of the district. However, educational institutions and emergency services remained operational as the protesters kept them out of the purview of the bandh. Meanwhile, adequate police forces have been deployed at different sensitive areas of the district to avoid any untoward incident. Prior to this, the tribal outfit had called for an economic blockade in the district on January 20th over the issue. आमे 11 दिन सत्याग्रह रे बसिनु मोसा डांसो खाई की सरकार कर्णपात कले नहीं बात दे कि आज बन डकरा शांतिपूर्ण बन डकरा में देइछु ता सत्य भी जदि सरकार महानगर निगम को जोटा कि बेआईन असंवैधानिक विज्ञप्ति को जदि खारज न करंती ताहले आगामी दिन रे रक्तपात हो आज्ञा एटा हमर जमी जगह लूट करछन्ती माने हमर जमी जगह लूट करिया लागि एटा गोटे अपचेष्टा आपण देखंतु राउरकेला जेते मूल बासिंदा अछन्ती आदिवासी अछन्ती को माने सपोर्ट करछन्ती महानगर निगम को आज आमे कहूछु जो अध्यादेश जारी करछन्ती पूरा पूरी संविधान को उल्लंघन करके हमको जो आम ऊपर जो अन्याय करछन्ती जो अत्याचार करछन्ती एटा माने The Rourkela Bandh issue also rocked the Odisha Legislative Assembly today, which led to the adjournment of the House till 3 p.m. Opposition Congress alleged that land belonging to tribal people have been included in the recently formed Rourkela Corporation without their consent. Congress Chief Whip Tara Prasad Bahinipati said the authorities have illegally brought their land under the jurisdiction of the new corporation without conducting any Gram Sabha or taking the consent of the affected villagers. His party colleagues Jogesh Singh and Prafulla Maji rushed to the speaker's podium and staged an impromptu demonstration, after which the House was adjourned till 3 p.m. However, ruling BJD countered the allegation, saying land of the people have been acquired in legal and legitimate manner. जगदा एवं झारता एवं दीटा पंचायत को म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन राउरकेला म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन रे सरकार मिसेवाली चेष्टा करछथि वायोलेटिंग ऑल द नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जहाँ अच्छी शेड्यूल 5 रे जहाँ व्यवस्था अच्छी आर्टिकल 244 क्लॉज 1 रे जहाँ व्यवस्था अच्छी ये सबू को वायोलेट करी सरकार आदिवासी अंचल को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे मिशन करबा लागि चाहछथि बेसिक जिनस ये मुझे कहीदेवा लगी चाहिए सरकार को जनईदेवा लगी चाहिए आपण माध्यम रे बिना ग्राम सभा कौन हालत रे भी आदिवासी जमी नहीं पारे सरकार कौन जगह सामिल करें अनलेस अंटिल दे गेट द परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताहले किछि हेई पारिबो। राउरकेला कॉर्पोरेशन गठन करबारे राउरकेलार आखपाखर 4टा पंचायत को पेशा आईन को उल्लंघन करी मनमुखी ढंग रे जनता जनार्दनकर निवेदन को आग्रह करी दमन करी आदिवासी मेली को भ्रूक्षेप नहीं करी तांकर हक अधिकार को मान्यता न देकरी सरकार जो भली भाव रे 4टा पंचायत को सामिल करुछि राउरकेला महानगर निगम रे सेटा दुर्भाग्यर विषय तुरंत सेथिरु सरकार क्षांतर हो जहाँ करा जायछि आईन अनुसार करा आइछि आईन बाहर किछि करा जाय नाही पेशा एक्ट रे अछि जदि जमी अधिग्रहण करबा को पड़े आदिवासी मानकर सेति पई ग्राम सभा एवं आपनकर पेशा आईन कानून सब कथा अछि किंतु ए जमी अधिग्रहण कार करा जाउ नाही एटी किछि एरिया को कॉर्पोरेशन जेहेतु दीर्घ दिन धरिक राउरकेला वासींकर राउरकेला को कॉर्पोरेशन करबा पई दाबी रहउथला तेणु राउरकेला को एक कॉर्पोरेशन करबा पई किछि अंचल निया जाइछि
जो अंचल नियाई इधर कहार जमी जाऊना एवं जहाँ करा जायछि आईन अनुसार करा जायछि एवं से अनुसार नोटिफिकेशन होती जदि कहार किसी कम्प्लेन थाए से निर्दिष्ट समय सीमा भितर कम्प्लेन दे पारे एवं कम्प्लेन आह्वान कराई जहाँ होती आईन के आधार करके आईन व्यवस्था अनुसार होती। Vice Chairman of Special Investigation Team SIT on Black Money Justice Arijit Pasayat said that a huge amount of black money is being generated in the education sector across the country. Speaking exclusively to this news portal, the former Supreme Court judge said the money is generated in the name of capitation fee which is collected from the students every year. Pasayat said that apart from tracking the sources of black money from mining and real estate sectors, the SIT is also focusing on the education sector. Let us hear what Pasayat has to say in this matter. Different sector जो थे कलाधन जनरेशन स्कोप रोचे फॉर एग्जांपल माइनिंग रियल एस्टेट ताकू तो आम फोकस करूँ कर छड़ा गोटे आमर नजर को एजुकेशन सेक्टर रे बहुत कलाधन जनरेशन स्कोप अच्छी एवं हेची जनरेशन तेणु अबिका एजुकेशन सेक्टर रे मध्य आमे फोकस करचु कहीं ना ये कैपिटेशन फी हरिका जो न्या होची से विषय रे मध्य अनुसंधान करा जाउची पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन जहाँ आम से दिगर करिया कथा आम करचु चिटफंड नहीं बर्तमान कौन सब आछि किछि से विषय सेमती स्पेसिफिक डिटेल मु किछ कहि परिबन हमर जेति के रोल कलाधन विषय ता भितर अछि से कटा को आम एग्जामिन करचु डिफरेंट अथॉरिटीज के संगे आम कथा है प्रोग्रेस करुचु जहाँ कोऑर्डिनेट करुचु जहाँ होची जो इन्वेस्टिगेशन हरिका होची जो तांकर इनक्वारीज हरिका होची डिफरेंट अथॉरिटीज कर ताको कोऑर्डिनेट करथलो प्रोसिक्यूशन करिया पई कि आउ हेवी पेनल्टीज करिया पई कि ये जो इनकम टैक्स ऑफेंसेस को प्रेडिकेट ऑफेंस करिया पई कि सरकार ताकू ग्रहण करचंती सेटा गोटे दिस स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ताहले कौन हम कि लोकों भितर जो बेपरुआ मनोभाव रोला सेटा रही दिस विल सेंड ए करेक्ट मेसेज जे तमे आईन भांगिक टिकस चोरी करी खुश पलैब संभव नुहे. The Odisha Electricity Regulatory Commission OERC is all set to defend revocation of licenses of Reliance Infrastructure run distribution companies at the hearing of the Appellate Tribunal for Electricity which is scheduled to be held on March 24th in New Delhi. Talking to media persons on the matter, Principal Energy Secretary Suresh Chandra Mahapatra said that the licenses have been withdrawn due to non-performances of the DISCOMs. The tribunal has already rejected Reliance Infrastructure's stay plea on the revocation of licenses of its 3 DISCOMs by OERC. से ऑर्डर को डिफेंड करिया पई कमिशन तार यथोचित जहाँ जति की व्हाट एवर रिक्वायर्ड से पदक्षेप नहीं आ 24 तारिख दिन कमिशन रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट जे भी से कमिशन को अपीलेट ट्रिब्यूनल सम्मुख रे रिप्रेजेंट करिवे 26 तारिख दिन नेक्स्ट हियरिंग अच्छी मोस्ट लाइकली मेरिट अनुसार हियरिंग हम एवं जेहेतु ओईआरसी ऑर्डर बहुत क्लीयरली लिखाई नॉन परफॉर्मेंस से बाहर करा विभिन्न पॉइंट सब एवं डाटा सब दिखाई बहुत क्लीयरली एवं मेरिट रे हमर एडवोकेट माने आर्गुमेंट करिवे. After the state government increased the intake in government engineering colleges, the Odisha Private Engineering College Association OPECA has alleged that such a step is in violation of the AICTE norms. The private engineering colleges which now face the likelihood of more vacancies after the capacity enhancement of government colleges have said that the state cannot take such a step without consent of National Board of Accreditation. Moreover, the decision to increase the intake in government engineering colleges have been taken by turning a blind eye to the lack of inadequate infrastructure in such colleges, said OPECA sources demanding level playing field for private colleges as well. এটা 100% উল্লঙ্ঘন তিনটাঙ্ক বেসিক জিনিস পাখে না তেমন এআইসিটির উল্লঙ্ঘন করছে আমি এআইসিটি বি লিখবু বিষয়ে যে সরকার যদি এআইসিটি তাঁকু ছাড়ব লেভেল প্লেইং ফিল্ড দেছু প্রাইভেট কলেজ যে চাহুছি যে সবু কলেজের তো সিট খালি রহুনি যে ভালো প্রাইভেট কলেজের সিট বড়ার তাকে বি এলাও করা আর রিল্যাক্সেসন ন করা পূর্বে ডিক্লেয়ার করবার অর্থটা কোণ আছে তেমন এটা আবসোলুটলি अनफेयर एंड अनजस्ट एंड अनकल्ड फॉर
Congress legislators have drawn the attention of the Assembly Speaker that issues of their respective constituencies are being ignored by the bureaucrats. Raising the issue in the State Legislative Assembly yesterday, Congress Chief Whip Tara Prasad Bahinipati alleged that officer Raj is prevailing in the state. The legislator stated that officers are ignoring people's representatives and it is a clear violation of the provisions under Section 47 of the Book Circular. Bahinipati was supported by his party colleague Prafulla Machi, who claimed that coordination between officers and the MLAs is the most essential for implementation of the developmental activities at the district level. बहुत मंत्री मानकु जो ब्यूरोक्रेट्स माने उत्तर उल्लेख करचंते ता संपूर्ण भूल तथ्य दउचंते एवं अनेक क्षेत्र रे उल्लेख करचंते तथ्य संग्रह करा जाउची एपरि भाबरे ए राज्य विधानसभा चलीचे विधायक मानकर कौन से भाग में सम्मान नहीं स्वाभिमान दिन को दिन बिक्री कर चलते गोटे पारस्परिक बुझामणार कथा ये तो मागी गलेण जाति ओडिकी हम ना सरकारी कर्मचारी माने लोकप्रतिनिधि मान को सम्मान देवा उचित लोकप्रतिनिधि माने निजर डिग्निटी रखिक व्यवहार कर अफिसर मान व्यवहार करवा उचित निर्दिष्ट अभियोग आनिले सरकार निश्चय कार्यानुष्ठान करेंगे किंतु केवल अभियोग करने अभियोग कले तार फल किसी हम ना बर या फल लोकप्रतिनिधि मैंने निजर जो जनसाधारण पाखे जो पतियारा से निजे ह्रास कर Olive Ridley sea turtles, which were earlier tagged to study their migration pattern, have reappeared for mass nesting on the sandy Gahirmatha beach of Odisha's Kendrapada district. The sighting of tagged turtles has given credence to the belief that these marine creatures prefer Odisha's nesting grounds for mass nesting. Nearly a dozen female turtles with metallic tags fitted on their flippers have been sighted on the beach during the ongoing mass nesting. The figure may be on the higher side, as locating the tagged turtle amidst millions of these animals under darkness was a Herculean task, said a forest official engaged in the watch and vigil duty at the nesting ground. The State Forest Department and Wildlife Institute of India had earlier tagged the turtles with metallic labels to keep tab on their pre- and post-breeding migration route. Around 30,000 turtles have been tagged over the years. In a fatal road accident, as many as 30 passengers travelling in a private bus were critically injured after a head-on collision with a loaded truck on the National Highway number 55 near Jhargadia of Dhenkanal district yesterday night. Sources said the bus carrying around 50 passengers was on its way to Dharmagad from Bhubaneswar collided with a coal-loaded truck coming from the opposite direction. Police rushed to the spot and sent the injured persons to the district headquarters hospital. According to the latest report, the condition of 4 passengers is said to be critical. Ruling Biju Janata Dal's flip-flop stance on the centre's proposed land acquisition bill has been exposed after it did not participate in the protest rally in which over 100 opposition MPs led by Congress President Sonia Gandhi marched from Parliament to Rashtrapati Bhavan yesterday. This has further raised questions over BJD's blow hot, blow cold attitude towards the BJP-led government at the centre, as it had earlier opposed the bill but later didn't even exercise its right to vote against the bill by staging a walkout. Criticizing BJD's non-participation in the march, Congress leader Pradeep Maji alleged that BJD's protest is only a show-off and the party has struck a deal with the BJP in this regard. और किसी वक्तव्य देले जे आम बिल को विरोध करछु बोली तापर वॉकआउट करि गले किंतु ए तो सब कथा बाहर को आ सारलानी विजु जनता दल तरफ कुआ जाई सारलानी जे हमर भारतीय जनता पार्टी सहित डील हेछि एवं आम भारतीय जनता पार्टी सहित मिली मिसी के आम काम करिबो ओडिसा एवं केंद्र. Before wrapping up, the headlines once again. Dawn to dusk Bandh disrupts normal life in Rourkela. Protesters are opposing government upgrading the steel city to corporation status. Rourkela Bandh issue rocks Odisha Assembly. Opposition alleges land belonging to tribal people included in the newly formed corporation without their consent. Vice Chairman of SIT on Black Money Justice, Arijit Pasayat, sees huge black money being generated from the education sector. Says investigation is on. Appellate Tribunal for Electricity to hear the Reliance plea on 24th of this month.
OARC says it will defend revocation of the DISCOM's licenses. And OPECA to knock AICTE doors over engineering college seat hike in Odisha. Thank you for watching. Good night.